Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope you all are fine. In the time of this COVID 19 outbreak, please be cautious. Wash your hands frequently. Do not touch your face and also not share cups, foods, or drinks. Please take all the requisite preventive measures of COVID 19 and stay at home. Today, we are going to discuss introduction of chemistry. Science is the poetry of reality. Before going to chemistry, we have to discuss what is science. Science word came from a Latin word scientia, which means knowledge. Everything's knowledge around us, whether it's about living things, it's about non-living things, it's about space, it's about Earth's crust, or anything around you, that would be considered in science. Okay, you can see at the screen that there are a lot of natural sciences. You can see that natural sciences can be divided into three main types: biological sciences, physical sciences, and earth sciences. What are biological sciences? Biological sciences are sciences of living things, and physical sciences are sciences of matter and energy. Earth sciences are sciences of earth. When going to the details of biological sciences, you can see that there are further branches that are botany, zoology, ecology, and many other branches. And when you come to physical sciences, that too have many branches, and that are physics and chemistry mainly. फिजिक्स फोर्स एंड एनर्जी के बारे में होती है और केमिस्ट्री जो है मैटर और इट्स के चार्ज के बारे में होती है. एंड व्हेन यू कम टू अर्थ साइंसेस, it relates to geology, astronomy, meteorology, and many other branches. But our concern is physical sciences and mainly chemistry. Before going to the chemistry, we will discuss about the brief history of chemistry. Please listen it carefully. Did you know materials such as plastic, synthetic rubber, sulfuric acid, and medicines like our favorite antibiotic penicillin all originate from the chemical industry of early Muslims, who were chemistry revolutionaries? In fact, the word chemistry in Arabic is kimia, with al as the definite article. Thus, alchemia meaning the chemistry, or alchemy in Old English. Today, we will discuss who made early discoveries in chemistry, what they were, and how they are contributing towards our modern society today. The father of chemistry. Can you guess who he is? Yes, he is Jabir ibn Hayyan, or Jibber as known by the West, was son of a druggist. He lived from 722 AD to approximately 815 AD. He spent most of his time in Kufa in Iraq and scientifically systemized chemistry. He devised and perfected many chemical processes like distillation, liquefaction, crystallization, sublimation, amalgamation, and filtration. Most of these processes are still used the same way today, his most famous being his distillation process. The glassware he used were also designed by him, most of which are still shaped the same way. He also built a precise scale which weighed items 6,480 times smaller than a kilogram, or 2.2 pounds. Jabir ibn Hayyan was also aware of atoms and compounds and how they combine to form bonds. He also attempted to make paper that cannot burn and ink that can allow us to read in the dark. His fascinating works were included in the Great Book of Chemical Properties, the Weigh and Measures, the Chemical Combination, and the Dyes. The great work of his was all done in his laboratory in Kufa and was rediscovered during demolition of some houses in the area of Damascus Gate. Al-Razi's Book of Secrets. Muhammad ibn Zakaria al-Razi was known in the West by Razis, who lived in Iran from 864 to 925 AD. He is famous for writing books like The Book of Secrets and The Book of Secret of the Secrets. He is most famous for the classification of natural and artificial substances, giving birth to the modern-day periodic table that we all know of.
One of his most interesting research was on waterproofing fabrics and making hair dyes. He also designed, described, and used more than 20 laboratory instruments, many of which are still in use, such as crucible, cucurbit, or retort for distillation. Al-Kindi. Al-Kindi lived from 801 to 873 AD in Iraq. He is most famous for writing a book on the chemistry of perfumes. The book contained 107 recipes for different scents. Does this increase your love for chemistry? Do you have a great idea that can inspire you to write a chemistry book one day? Stay tuned as we dive deeper into the intriguing field of chemistry and give you answers to some. Okay, dear students, यहाँ पे आप लोगों ने बहुत ही important बात learn की that we Muslims are the ancestors of chemistry. हम मुसलमानों की इजादें हैं केमिस्ट्री. हम लोग प्राउडली कह सकते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? जाबिर बिन हयान, who was a Muslim scientist. ओके, इनके बाद अलकुंदी, अराजी, ये सारे साइंटिस्ट थे. इन्होंने बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे उस टाइम में. आज से सदियों पहले इन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए थे जो आज भी यूज हो रहे हैं. इन्होंने जो प्रोसेस सब्लिमेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, जो प्रोसेस केमिस्ट्री में यूज हो रहे हैं, ये आज से सदियों पहले इन्होंने हमें बता दिए थे. ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री जब भी आप देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा इट इज ऑल अबाउट मुस्लिम्स. मुसलमानों ने स्टार्ट की, मुसलमानों ने इसके बारे में स्टार्ट में बुक्स लिखी और इस नॉलेज को स्टार्ट किया. अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस केमिस्ट्री को आगे लेके चलें और हम अपना खोया हुआ मकाम दोबारा से वापस हासिल करें. ओके, व्हाट डू यू थिंक अबाउट केमिस्ट्री? आपके माइंड में क्या आता है? एक कॉमन माइंडसेट है. बच्चे जब 8th ग्रेड से 9th ग्रेड में आते हैं तो एक कॉमन माइंडसेट बना दिया जाता है केमिस्ट्री बहुत टफ सब्जेक्ट है. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. केमिस्ट्री बिल्कुल भी टफ सब्जेक्ट नहीं है. इट इज ऑल अबाउट एवरीथिंग अबाउट अराउंड यू. आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी केमिकल्स हैं और उन सारी चीजों की स्टडी क्या होती है? केमिस्ट्री होती है. ये आप फर्दर आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे क्या क्या चीजें केमिस्ट्री हैं और आप क्या क्या चीजें डेली जो बात करते हैं जो उसमें भी केमिस्ट्री शामिल होती है. अभी आप सांस ले रहे हैं, आप एक केमिकल इनहेल कर रहे हैं तो इसमें केमिस्ट्री शामिल है, केमिकल रिएक्शन शामिल है. कौन सा केमिकल इनहेल कर रहे हैं आप? ऑक्सीजन. और जो आप एक्सहेल कर रहे हैं, कौन सा केमिकल एक्सहेल कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये हो गई ना केमिस्ट्री ऑल अबाउट यू. जो आपके इमोशंस होते हैं, जैसे अभी आप शायद बोर हो रहे हो केमिस्ट्री का लेक्चर सुन के, या शायद आप एक्साइटेड हो लर्न करने के बारे में, तो जो आपके इमोशंस होते हैं वो इमोशंस भी केमिकल्स की वजह से होते हैं. तो दैट इज आल्सो रिलेटेड टू केमिस्ट्री. आपके आसपास जो एयर है, ये एयर भी मिक्सचर ऑफ केमिकल्स है. ओके, तो नाउ यू must be thinking that everything around you is a chemical and you have to study everything in the chemistry. और जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजों के बारे में पढ़ें. केमिस्ट्री की डिफरेंट ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस में हम एक चीज को पढ़ते हैं, सारी चीजों को हम इकट्ठा नहीं पढ़ते. आप सोच रहे हैं वेयर इज केमिस्ट्री प्रेजेंट? बाय सीइंग दिस वीडियो, बाय वाचिंग दिस वीडियो, यू विल बी एबल टू लर्न वेयर इज केमिस्ट्री प्रेजेंट. With those chemicals. Didn't you know that calf and that tomato plant are filled with chemical elements? Like all living organisms, plants and animals are mostly composed of carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Think about it. You, the calf, and the tomato plant are basically just 4 chemical elements. These same elements are found in the air, water, and soil, especially in the soil's organic matter. Which, by the way, is not the same thing as organic produce. No, organic matter is anything formed by living organisms that contains carbon compounds, such as manure, dried leaves, and food waste. Inorganic matter, on the other hand, is composed of other common elements like silicon, aluminum, sulfur, magnesium, phosphorus, and potassium. Many of these common elements are important because they are nutrients for plants and animals and are often the ingredients for vital substances. For example, nitrogen is an essential component of proteins, the basis of muscle in animals. Likewise, magnesium is used to make chlorophyll, that critical substance that plants use to absorb light energy.
Without these elements, plants and animals would not function properly. And it's not just the elements that are important, but how they are put together. You see, elements are the building blocks for everything, and the smallest bit of an element is an atom. Atoms come together in bonds to make molecules. They take electrons, they share electrons. They basically connect in different ways, and how they connect matters greatly. For example, let's compare glucose to, say, glucose. Even though they contain the same elements, carbon, hydrogen, and oxygen, alpha glucose and beta glucose bond differently. Alpha glucose bonds in a straight line and forms amylose, or starch, as in what's found in potatoes. Whereas beta glucose has to rotate 180 degrees, so it can bond and form a strong, complex structure called cellulose, as in what's found in corn stalks and tree trunks. Beta glucose bonds are so strong that humans can't digest them. So even if we could chew corn stalk, we wouldn't get many nutrients from it. Fortunately for cows, bacteria in their digestive tract help makes the nutrients available by breaking the strong cellulose bonds. This is why chemistry is such a valuable tool for agricultural, environmental, and food scientists. In agriculture, it helps farmers determine how much and how often to fertilize. It's also used to calculate the amount of protein in animal feed. By preventing overfeeding and overfertilizing, chemistry helps stop pollution and waste, which makes environmental scientists very happy. And food scientists make us all happy by studying how molecular structure can make recipes taste even better. Whether it's in the kitchen or on the farm, it all makes sense once you realize that you're not just working with food or growing plants or raising animals, you're working with chemicals and chemical bonds. ओके डियर स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ आइडिया हो गया होगा कि चाहे आप किचन में हैं, चाहे आप फार्म हाउस में हैं, चाहे आप अपने एनिमल्स पेट्स के साथ हैं, चाहे आप कॉज के साथ हैं, चाहे आप प्लांट्स के साथ हैं, हर चीज केमिकल से बनी हुई होती है, हर चीज की बॉडी केमिकल से बनी हुई होती है और सारी चीजों के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? केमिस्ट्री प्रेजेंट होती है. ओके और केमिस्ट्री की जो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग होती है वो कौन सी होती है? एटम. अब यहाँ पे इस वीडियो में उन्होंने आपको क्या बताया कि एटम ही बेस होता है हर सब्सटेंस के डिफरेंट तरीके से बनने की. और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर सारी चीजें दुनिया की, सारा मैटर एटम से बना हुआ है, तो फिर चीजें डिफरेंट क्यों होती हैं? तो इसका आंसर भी इस वीडियो में कुछ हद तक दे दिया है कि बेटा डिफरेंट इसलिए होती हैं कि जब दो एटम मिलते हैं ना, तो वो किस तरीके से मिलते हैं, वो किस रेशो में मिलते हैं, ये चीज बहुत काउंट करती है. ठीक है, अगर दो ऑक्सीजन के एटम मिलेंगे तो वो ऑक्सीजन गैस बनाएंगे, लेकिन अगर दो ऑक्सीजन के एटम जो हैं, एक ऑक्सीजन का एटम दो हाइड्रोजन के एटम के साथ मिल जाएगा तो वो पानी बना देंगे, वाटर बना देंगे. तो ये बहुत मैटर करता है. जब एक जैसे एटम भी मिलते हैं, डिफरेंट तरीके से मिलते हैं, डिफरेंट रेशियोज में मिलते हैं, तो आपके पास डिफरेंट थिंग्स प्रोड्यूस होती हैं. So chemistry is a big part of your everyday life. Chemistry is present in food. Food कौन से? जैसे आप carbohydrates लेते हैं, वो भी chemical compound है. आप proteins लेते हैं, that too is a chemical compound. Air is also a mixture of gases, and all gases are chemicals. Cleaning chemicals, your emotions. आपके जो emotions होते हैं, जो happiness के hormones होते हैं, serotonin और oxytocin, और ये सारे hormones जो होते हैं, ये सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं. ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स जब रिलीज होते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट इमोशंस प्रोड्यूस होते हैं. कभी आप सैड हो जाते हैं, कभी आप हैप्पी हो जाते हैं, कभी आप एक्साइटेड हो जाते हैं. ओके, एवरी ऑब्जेक्ट यू कैन सी और टच. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कोई मैस होता है, जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं. और केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट स्टडी ऑफ मैटर. नाउ वी आर एबल टू डिफाइन केमिस्ट्री. Chemistry is the branch of science which deals with the study of matter, its composition, properties, and its reaction. किस किस के बारे में है केमिस्ट्री? ये बेसिकली मैटर के बारे में है. और मैटर की कौन कौन सी चीजों को स्टडी करती है? ये मैटर की कंपोजिशन को. कंपोजिशन का मतलब है कौन कौन सी चीजों से, कौन कौन से पार्टिकल से मैटर कंपोज हुआ है. और प्रॉपर्टीज, इट मींस कि आपके पास एयर है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, वाटर है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं, व्हीट फ्लोर है, उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं. तो केमिस्ट्री उनकी प्रॉपर्टीज के साथ रिलेट करती है. एंड इट्स रिएक्शंस, कि कोई भी दो सब्सटेंसेस जब मिलते हैं, दो डिफरेंट मैटर्स मिलते हैं, तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं, उनका केमिकल रिएक्शन किस तरीके का होता है. इट इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री. ओके,
How can you define chemistry? It is a branch of science which deals with the study of matter, its composition, properties, and its reactions. Now, what comes into your mind that what is matter? Anything that has mass and occupies space is called a matter. Means chemistry is all about every object around you. हर चीज आपको जो नजर आ रही है वो उसका कोई ना कोई मैस है ना, वो कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्युपाई कर रही है, तो वो क्या है? मैटर है. और उस मैटर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री कहते हैं. तो मैटर कैन बी इन थ्री टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और अब तो एक और टाइप भी डिस्कवर हो चुकी है, प्लाज्मा. जो स्पेस का जो मैटर होता है ना उसको प्लाज्मा कहते हैं. Okay, now there's another helpful video for you. What is chemistry? Chemistry is the science of matter. This may sound simple, but chemistry is a complex and broad topic that covers a wide variety of fields. From the core of the Earth to the farthest reaches of the universe, chemistry is everything and everywhere. Chemistry, a definition. Chemistry is the study of matter, including its composition, properties, and structure, how it changes, and how it interacts with energy. This is a pretty simple definition that sums up what is actually a complex and fascinating subject. If you have ever asked why or how something is in the natural world, odds are good that your question and the answer were related to chemistry. For instance, why is the sky blue? Colors depend on the chemical makeup of substances and what kind of light they reflect. How does an insect walk across the surface of a pond without falling through? The unique properties of water give it a high surface tension, which means that small objects can rest on it without sinking. Chemistry is all around, and anything related to matter involves chemistry. Main branches of chemistry. Since chemistry is such a broad and vast subject, we can divide it up into more manageable topics to help us more accurately. 1. Organic chemistry. 2. Inorganic chemistry. 3. Analytical chemistry. 4. Physical chemistry. 5. Biochemistry. We will learn more. Okay, dear students, I hope you have learned what is chemistry. Chemistry is the study of matter, its composition, and its properties. And matter is present everywhere around you. ओके केमिस्ट्री बेटा एक अब मैटर जो है तो आपके इर्द गिर्द सारी चीजें जो मैटर है, अब सारे मैटर को हम किसी एक ब्रांच में तो नहीं स्टडी कर सकते क्योंकि केमिस्ट्री एक बहुत ही ब्रॉडर टर्म है. इसीलिए क्या किया जाता है कि केमिस्ट्री की आगे फर्दर ब्रांचेस बना दी जाती हैं. सारे नॉलेज को डिवाइड कर दिया जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में और उन पार्ट्स को हम अलग-अलग से स्टडी करते हैं. जैसे अब हमने बीएस किया है ना, बीइंग टीचर, तो बीएस में हमने स्पेशलाइजेशन की होती है. नाम तो हमारी डिग्री का बीएस ऑनर्स केमिस्ट्री है, लेकिन स्पेशलाइजेशन मेरी स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अब कुछ बच्चे एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक. हर किसी की अपनी चॉइस होती है. ओके ये आप ब्रांचेस जो हैं आप डिटेल से नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे. आज का लेसन सिर्फ इंट्रोडक्टरी है. What is सो व्हाई वी स्टडी केमिस्ट्री? क्यों जरूरत पड़ गई है हमें केमिस्ट्री स्टडी करने की, जो आप लोगों के मुताबिक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, लेकिन अभी तक आप लोगों को समझ आ गई होगी कि ऐसा कुछ नहीं है. केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है. सो आंसर इज हियर इन दिस वीडियो. व्हाई वी Does chemistry seem like the kind of thing that only old people in white coats can do? We're actually all chemists. Even our bodies are made of chemicals. When we eat, breathe, or just sit down, chemical reactions are taking place. All matter is made from some kind of chemicals, so chemistry is the study of everything. But how does chemistry occur in our everyday lives? The most obvious place is in the kitchen. When we cook something, a chemical reaction occurs. The raw meat turns into cooked meat so that our bodies can absorb the nutrients better. When we bake a cake, the ingredients cause a chemical reaction to create the batter. And then another chemical reaction happens when it goes into the oven. Even the way we store our food in the fridge and when things rot away are all chemical reactions. Another common aspect where chemistry occurs is through cleaning. Chemicals are created to target specific areas like dishes, laundry, and your body. Imagine using bleach to wash your body. It would burn. But even children know not to use bleach to wash themselves, which means that the moment we start learning about what cleaning products to use, we are already junior chemists. Medicine is another important use of chemistry.
The pills and medicine we use are all made from chemicals that are there to make our bodies stronger and to kill viruses and bacteria. Then things like fruits and supplements can be used to prevent illnesses, and these are also produced from chemical reactions. Basically, without medicine, which requires chemistry, we would get sick very often. And chemistry is used to research new medicines. Can you believe that about 100 years ago, people died from having a cold? It's because of discoveries in chemistry that we now have cheap medicines to get rid of the cold. Chemistry is also an important part of our environment. Fertilizers and compost for our gardens are created when chemical reactions take place. Think about how cow or horse dung is used to fertilize plants. People were doing it for centuries before scientists discovered how it actually works. But farmers started doing it after seeing how plants reacted to the dung. So even though they didn't study chemistry like you are, they were really good chemists. But there are more serious things to look at, like how some chemicals are nutritious to the environment and others cause pollution. Only through studying chemistry can we begin to discover ways to produce chemicals that are sustainable and not harmful to the natural world. In summary, we can see now that we're all chemists. From cooking food to cleaning ourselves, we make choices every day based on the way chemicals work. Chemistry is also important for the creation of medicines and environmental issues. By doing research in chemistry, we can find new cures for diseases as well as better chemicals to use in our natural environment. Chemistry can help change the world. Okay, dear students. Does chemistry seem like आप लोगों को अब तक बहुत सारा आइडिया हो गया होगा कि हम केमिस्ट्री क्यों स्टडी करते हैं. चाहे हमारे फूड का प्रॉब्लम है, चाहे हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, मेडिसिन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इंडस्ट्री से रिलेटेड, हमारी जो एग्रीकल्चर है उससे रिलेटेड, इन सारी चीज़ों की बेटरमेंट के लिए केमिस्ट्री को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से डील करने के लिए केमिस्ट्री को स्टडी करना ज़रूरी है कि कौन से केमिकल इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं, कौन से केमिकल नहीं अच्छे. ठीक है. और हमारे फूड में कौन से सप्लीमेंट्स हमें लेने हैं, कौन से सप्लीमेंट हमें नहीं लेने, कौन से केमिकल यूज करने हैं, कौन से केमिकल हैजर्डस हैं. ओके. और मेडिसिन, पहले जमाने में ऐसा होता था कि छोटी छोटी बीमारियों से लोग मर जाते थे, और अब ऐसा नहीं है. अब तो कैंसर तक की जो है मेडिसिन डिस्कवर हो चुकी हैं, और वो सारी किससे बनी हुई है? डिफरेंट केमिकल कंपाउंड से बनी हुई है. अब इंशाल्लाह कोविड-19 की भी मेडिसिन डिस्कवर हो जाएगी. ओके, सारी चीज़ों में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और हमारे एनवायरनमेंट, हमारी एक बेटर सोसाइटी के लिए, एडवांस सोसाइटी के लिए केमिस्ट्री को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है. और अब आप ज़रा एक इनसाइट देख लें कि केमिस्ट्री किसके अबाउट होती है. इसमें एक्चुअली हम कैसे स्टडी करते हैं कि एक जो ऑब्जेक्ट आपको नज़र आ रहा है, इसकी इनसाइट क्या होती है, ये अंदर से कैसा बना हुआ था, इसकी कंपोजिशन कैसे होती है, और केमिस्ट्री को हम उस ऑब्जेक्ट की स्टडी के लिए, इस मैटर की स्टडी के लिए कैसे रिलेट करते हैं. यू कैन सी दैट इन द वीडियो. Of glass, water, and an ingot of copper. But to see their atoms, we'd need to magnify them to make them look 1 billion times bigger. Let's do that. Normally, the different kinds of atoms are all mixed up and joined to other atoms, and it's unusual to find one kind of atom all on its own. To tell the atoms apart, we've made an atom code with different coloured balls and 1 or 2 letters. The little white ones show hydrogen atoms with letter H. The black ones carbon, oxygens are red, silicon's grey, and copper is orange. Notice that oxygen is in 3 different substances here: wood, glass, and water, which look and feel very different to each other. And hydrogen is in both wood and water. The same atoms can make completely different substances when they're put together in different ways. Now we're going to pull apart all of the atoms from their substances and put them into separate piles. All the hydrogens go here, the carbon's here, oxygen's here, silicon's here, and copper's here.
We can't pull the piles apart into any more kinds of atoms, so they're now as simple as they can get. These 5 piles of atoms make substances too, but they look and feel different when they're all on their own. A collection of hydrogen atoms will make a colourless gas, so we'll have to catch them in a jar and put a lid on it so it doesn't escape. We'll now shrink the atoms back to their real size and out of sight. A collection of carbon atoms will make a black solid. Oxygen atoms will also make a colourless gas. And silicon atoms make a shiny grey solid. Copper atoms make a shiny orange solid. By the way, the colour of the substance isn't necessarily the same as its atoms. We've just done that to make it easier to follow. These substances containing only one kind of atom are as simple as they can get, because they can't be separated into any more kinds of atoms. So they're given a special name: elements. An element is a substance made of only one kind of atom. Strictly speaking, an element refers to the substance that you can see and touch, such as the chunk of carbon that's made of trillions of carbon atoms. But sometimes we talk about a single atom of carbon as being an element too. And did you notice that one of the substances on the desk that we started with had only one kind of atom in it? Which one? Copper. Copper was already an element before we pulled it apart and put it back together again. For fun, let's throw in more objects at the bottom of our screen. A bike, a budgie, a banana, and a ball, and an apple. But what if we took the whole world, plus all the planets and the stars too? Of glass. Okay dear students, this was all about chemistry. आज आप लोगों ने chemistry के बारे में क्या क्या चीजें learn की, आप लोगों ने chemistry को define किया. Chemistry is study of matter, its composition, its properties and everything around you. Okay, इसके बारे में आपने ये study किया कि chemistry की history क्या है. Chemistry belongs to us. We are ancestors of chemistry. Jabir bin Hayyan, a Muslim scientist, is the father of chemistry. इनके अलावा जो है अराजी एंड ख्वाज़मी एंड बहुत सारे साइंटिस्ट अलकुंदी इन्होंने काम किया केमिस्ट्री के बारे में. इसके बाद आप लोगों ने पढ़ा केमिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमें एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए, वेदर दैट इज इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर और इन टर्म्स ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, किसी भी वे में आप देखें तो आपको एक बेटर सोसाइटी बनाने के लिए केमिस्ट्री का बेटर नॉलेज होना ज़रूरी है. ओके, और एक गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, as it was your introductory lesson, so there is no homework for you. Thank you so much. Have a nice day. See you in the next lesson. Allah Hafiz.